Hello friends, welcome to my channel. Today we'll discuss about ChatGPT, OpenAI ChatGPT. So what is the agenda of today's topic? Let's move to agenda. So here we'll discuss about what is ChatGPT. ChatGPT क्या है? How to integrate ChatGPT with CSAP. Then we'll go through some prerequisite कि हम लोगों को ChatGPT में इंटीग्रेट करने से पहले हम लोगों को क्या-क्या prerequisite और क्या क्या हम लोगों को पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे मशीन्स में एंड हाउ वी कैन जनरेट द एपीआई की यूजिंग ओपन एआई एपीआई। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक एआई लैंग्वेज मॉडल है एंड उसको डेवलप किया है ओपन एआई ने। ये बेस्ड है जीपीटी आर्किटेक्चर के ऊपर। सो जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है, इट इज जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। एंड जीपीटी वर्जन 3 जो है ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है एंड इस वर्जन में हमारा सितंबर 2021 तक का नॉलेज आपको मिल सकता है। सो अगर कोई इंफॉर्मेशन 2021 सितंबर के बाद अपडेट हुआ है देन यू विल नॉट गेट दैट अपडेट इन चैट जीपीटी एंड दैट इज द डिमेरिट। बट ये आगे जाके प्रोबेबली इम्प्रूव करेगा बिकॉज इट इज द एआई टूल, सो इट विल इम्प्रूव एंड विल लर्न and it will be much better day by day. So it will be improved, yeah. Then chat gpt एक नेचुरल लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज समझ सकता है एंड जनरेट भी कर सकता है। चैट जीपीटी हमारा नेचुरल लैंग्वेज को समझ सकता है एंड जनरेट भी कर सकता है। ये हमें जैसे कि ह्यूमन से इंटरेक्ट भी करता है विथ रिटन कन्वर्सेशन। जीपीटी ट्रेंड हुआ है एक बड़े अमाउंट से इंटरनेट डेटा के साथ जो कि जीपीटी को हेल्प करता है लर्न करने में, लाइक पैटर्न्स लर्न करने में, ग्रामर लर्न करने में, कॉन्टेक्स्ट मतलब कि कॉन्टेक्स्ट भी हमें एक वास्ट अमाउंट ऑफ टेक्स्ट से वो लर्न किया हुआ है। सो दिस इज हाउ द चैट जीपीटी वर्क। सो नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू इंटीग्रेट चैट जीपीटी विथ सीसैप एग्जाम्पल। बिफोर दैट चैट जीपीटी इंटीग्रेट करने के लिए हम ओपन एआई यूज करेंगे एंड टू सेंड रिक्वेस्ट एंड रिसीव रेस्पॉन्स फ्रॉम द मॉडल। तो हमें पहले रेस सर पैकेज को इंस्टॉल करना होगा, बट बिफोर दैट वी नीड टू क्रिएट और वी नीड टू जनरेट ए एपीआई यूजिंग ओपन एआई। सो ओपन एआई में हम लोग कैसे एक एपीआई की को जनरेट करेंगे वो हम उसके पहले देखेंगे। So let's go to OpenAI site और वेबसाइट। So ये है हमारा OpenAI साइट वेबसाइट जहां पे हम लोगों को साइन इन करना है, या फिर किसी का अकाउंट नहीं है यहाँ पे तो वो साइन अप भी कर सकते हैं यूजिंग देयर गूगल अकाउंट और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। बट आई हैव माय अकाउंट हियर, सो आई जस्ट लॉग इन हियर एंड व्हेन आई क्लिक ऑन लॉग इन इट विल शो मी दिस यूआई। नेक्स्ट ये यूआई से हम लोग एपीआई के ऊपर क्लिक करेंगे। दिस एपीआई बॉक्स जो दिख रहा है इसको हम लोग क्लिक करेंगे। नाउ इट विल रीडायरेक्ट टू ए डिफरेंट पेज। सो हम लोगों को अभी मैंने एपीआई की इसका जनरेट ऑलरेडी किया हुआ है। अगर किसी को एपीआई की जनरेट करना है तो आपको यहाँ पे पर्सनल में जाना है, जो कि हमारा राइट हैंड साइड कॉर्नर में है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू एपीआई की। एंड इन व्यू एपीआई की में हम लोग इस बटन में क्लिक करेंगे टू क्रिएट ए न्यू सीक्रेट की। सो ये हमें सीक्रेट की देगा। आप नेम स्पेसिफाई कर सकते हो, आपको जो भी रखना है आपका एपीआई की का नाम, एंड फॉर एग्जांपल सम काइंड ऑफ लाइक सैंपल डेमो एंड सो ऑन। एंड उसके बाद आप क्रिएट सीक्रेट की बटन में क्लिक करोगे तो इट विल जनरेट ए सीक्रेट की फॉर यू एंड दैट सीक्रेट की विल बी यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ चैट जीपीटी। This is how you can generate the secret key from OpenAI site. So we'll go to Visual Studio now to see what are the prerequisites we need to write the program to integrate with ChatGPT. So here is my Visual Studio. Now I have opened a console application, or I have created a console application, and you can see like this is the console application program.cs page. And here we'll write the code to integrate with ChatGPT. Now हमें प्रोग्राम
राइट करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट फॉलो करना है, जैसे कि हम लोगों को कुछ नगेट पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हाउ वी कैन install nugget packages? So as you know, like we need to visit to tool, then here you can go to nugget package manager, then you can use package manager console, or you can also use nugget package per solution. So here, what will be the command? First we'll install rest using the packages or using the command. So let's see how we can install rest package. For that we'll use the command called install hyphen package, then rest and hit enter. So now it will install the rest package in your solution or in your application. Next, we'll need to install the nugget package for newtonsub.json. So for that, I'll use the nugget package manager for solution, because it will be easy for you to check the version of it. So I have, as you see, like I have already installed newtonsub.json package, but if you want to install, then you just need to type your newtonsub.json and it will show you the packages or the nugget packages, and you will just select and click on install. This will install newtonsub.json for you. So these are the two packages we need to install to run ChatGPT or to integrate ChatGPT with a solution. This is the packages we needed to integrate the ChatGPT in a project or in with console application. And then what we need to do first, before writing the program, you need to import the namespaces. For example, first one you need to import like raster, and second one will be the newtonsub.json, and this one maybe we don't need this one. And now this basic structure is ready to start. So we'll now first implement the main method, or what we will do first, we'll create a API key here, or the secret key. That's the secret key that we have used or created. We just need to specify over here, and that secret key we'll use to communicate with OpenAI ChatGPT. So अब हमें ये क्यों करना है? तो हम जब सेंड रिक्वेस्ट करेंगे तो फंक्शन को कॉल करेंगे विद सम इनपुट मैसेज टू गेट अ रेस्पॉन्स. सो यहाँ पे हम लोग एक कंसोल से input message देंगे, and based on that particular input message, ChatGPT will send us the response. So what we need to do first, then we need to set our API key in the main method. So for that, I'll type string. For example, API key will be the variable, and I need to specify my API key. So I have already copied my API key to the notepad. So I'll just use that API key I'll just use that API key here. I'll just copy paste the API key. Yes, now I have specified my API key. Now we'll write the code to give the user input. So to give the user input, what we need to do, I'll just write console.write, and I'll just ensure something will be showing on the console. So I'll just type user, और मैंने इसको सेमीकोलन के थ्रू क्लोज कर दिया. नेक्स्ट हम लोग रीड करेंगे, यूजर मैसेज को रीड करेगा. हम लोग यूजर मैसेज पास करेंगे, दैट विल बी रीड बाय द ChatGPT एंड इट विल सेंड द रेस्पॉन्स. तो उसके लिए हम लोगों को क्या लिखना है यहाँ पे? सो लेट मी अगेन डिक्लेयर अ वेरिएबल लाइक यूजर मैसेज. फॉर एग्जांपल, यूजर मैसेज इज इक्वल्स टू console dot whatever we want to type, we will type in the console, that will be sent as user message. So this is our user input. Now we will call the method where the code will be written, the API or the REST client and all those API code will be written, and that code will call here. So हम लोग वो call करेंगे वो particular method को here. For example, I'll to get the response.
So for example, I'll type here string response is equals to what will be the name of the method. I'll give a particular name, like for example send request. We'll send the request to ChatGPT and it will get the response. So I'll just give the method name as send request, for example. And here we'll specify two parameters. One will be our API key, another one will be our user messages. So I'll pass your API key and user messages. I'll hit enter, and now I'll create a send request method. I'll generate the method here. So it will implement that particular method later. Now, what we'll do to display the response in our console, we'll just write console dot console dot write line, and it will be our response. So for that, I'll just add some text here like chat GPT. So chat GPT send this particular response. So that will I'll mention here chat GPT. So chat GPT हमारा ये response देने वाला है हमें. So I'll just mention chat GPT के through ये response हमें मिला है. So now our main method work is complete. तो हम लोगों ने अभी मेन मेथड लिख दिया है जहां पे हम लोगों ने एपीआई की स्पेसिफाई किया, यूजर इनपुट हम देंगे एंड बेस्ड ऑन दैट यूजर इनपुट हम लोगों को उसका रिस्पांस मिलेगा थ्रू चैट जीपीटी. एंड नाउ विल इंप्लीमेंट द actual method where we'll integrate with ChatGPT. For that, what we'll do, we'll first create an object of REST client. So to create the object of REST client, I'll type here var client is equal to new REST client, and here we need to specify the base URL. तो हमें ये बेस यूआरएल कैसे मिलने वाला है? तो बेस यूआरएल मिलने के लिए जो हमारा ओपन एआई का साइट है वहां पे उसका डॉक्यूमेंटेशन है. आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे एपीआई रेस्पॉन्स है, यहाँ एपीआई रेफरेंसेस है, and in API references we'll see the models. So these are nothing but we can say as this base URL or base URL. So ये हम लोग यूज करेंगे as a base URL to communicate with the ChatGPT. So I have already specified my base URL here, OpenAI API base URL here. I have already copy paste from the site. So I'll just use this one, and I'll mention in the REST client, I'll just pass the base URL. So there are some other text also came up. I need to copy that again. So let me copy that again so that it will the appropriate result, and I'll just paste it here. So now we have the REST client with base URL. Now we'll create a request and add some header, and that request will send to OpenAI or to get the response. So for example, for that, what we'll do, we'll just create a request, that is request. I'll create a request object. Request object, I'll just specify request here. Is equals to new REST request. It will be of REST request, and here there will be no API key. Here is my request object. So we'll send, it will be a post method. So we'll specify here request dot method which equals to method of post. तो ये हमारा post method है और post request है. Then we'll add some header to the request. So for that, request dot add header, and यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई करेंगे ऑथराइजेशन, जहाँ पे हम लोग बियर टोकन सेंड करने वाले हैं in the header.
सो उसके लिए हम लोग स्पेसिफाई करेंगे that will be authorization. Then we'll specify the bearer token, so we'll write here bearer. Sorry, I need to put it in bracket. And then we'll specify here plus API. We'll pass the API key here in the header. Next हम क्या करने वाले हैं? What will be the type? It will be the content type will be application JSON. So again, I'll just type request dot add header, and the content type I'll mention here. For example, content type will be my, here will be application slash JSON. So our content type will be application slash JSON. Now what we'll do, we'll create a JSON object where we'll pass that particular message, means we'll send a prompt with message and the maximum token value. So now what we'll do, var body JSON is equals to new J object, and here the semicolon, and now we'll write the prompt, and prompt will send the value as, or in our case it will be user message. And sorry, in user message it is nullable, so I'll just it is a typo, I'll just remove that. Okay, now again we'll define the, for example, I'll just specify maximum token. Maximum token will be 50. So our JSON object is ready. Now what we'll do, we'll now in the request we'll pass a parameter in the request body, or type of parameter added to the request body. So for example, for that we'll type add a parameter. For example, for that we'll write request dot add parameter, where we will specify the type will be application plus JSON. Then we'll pass the, in the parameter we'll pass the body JSON, which will contain the user messages, and it will be of type string. So I'll just convert it to string type. Then I'll paste the parameter type as request body. So the parameter type will be request body. So we close it. Yeah. So we have now added a request parameter or parameter. Now what we'll do, we'll get the response. So for that I'll specify here for var response is equals to, we have created the REST client object, so we'll use client dot execute, and here we'll pass our request. Then we'll get the or we'll fetch the response JSON. So for that I'll again specify var response JSON is equals to J object dot parse. We'll parse the JSON object to response dot content. Okay, so now we'll check if we have any value in the response or not. So we'll add a condition for that. For example, we'll check if response of
choices. Specify response of choices it's not equals to null, and we'll specify count is greater than 0 of the response.json. Sorry, to specify the other response.json. And again I see like response JSON of choices dot count is greater than 0. So if response JSON, the content of the response JSON has some value, then we'll just return that. So return response JSON, then we'll specify here choices of 0 text dot toString, because our return type is toString, so I'll specify a toString, just trim it. So now it will return the response JSON. So if the value is null, if we get the response JSON as null, then we'll handle that, or we'll print some message saying that, let's say I could not generate the response or something. So I'll just return the response. Semicolon. So now our program is ready. Now we'll run the program and see the output. So I'll just, for to know whether we are getting the response or not, I'll just here we'll just keep a breakpoint so that we can see if there is any response we are getting, and here we will also see what will be the response we are getting. So I'll just here will add a breakpoint to see what are the response we are getting. So let's build our program. I'll just rebuild to see if there is any error. No, I think we are good. Now we'll execute our program. Now you can see I have specified the console, right? It will ask for user input. So now it is asking for user input. So let me type something like, what is chat GPT? I'll hit enter. Now we can see the message I have typed, और the message जो मैंने अभी टाइप किया है वो यहाँ पे हमें मिल रहा है, and we see the response is okay, means the response is success. That means कि it is working. Now we also got the response JSON. Now I'll do F5 here. We'll come here and we'll see the response, and I'll just do F10 to see the, and again do the F10. So it is showing the error. Maybe I have done some mistake here. Let me check. Okay, so we need to add here the plus symbol. Control S. Again, I'll run the program, and here again I'll add what is chat GPT and hit enter. We have already seen the response. So I'll just quickly press on continue. Now you can see we are getting the response. So here it is saying ChatGPT is an experimental chatbot built using OpenAI ChatGPT GPT-3 language model. So we are getting the response from ChatGPT. So I am done with the
today's agenda. Thank you guys for watching the video. If you like the video, please do not forget to subscribe. It will help me to create new content for you. So thank you so much.